Good morning, dear students. I am your science teacher, the principal of the school, Dr. Amit Alexander Charan. Here is the chapter number 6, named as Combustion and Flame. As we all know, there are various chemical reactions which occur in our environment simultaneously. They are very fast and they always accompanied by release of energy. So, energy can be obtained by burning various substances like coal, petrol, diesel, kerosene, natural gas and LPG, which are generally known as fuels. So by burning a fuel we obtain heat, which is the thermal energy. Heat word जो है वो thermal energy के लिए use होता है, and sometimes it is also accompanied by light. So the first heading is, what is combustion? So the chemical process in which a substance reacts with oxygen to give heat and light is called combustion. कोई भी reaction जिसमें heat and light involve होती है in the presence of oxygen, it is known as combustion. And the light may be in the form of a flame, एक लंबी लपट निकलेगी, और glow, or it will simply glow. So the substances which produce heat and light during burning, they are known as combustible substances, या or else हम इसको कह सकते हैं fuel. They can be solid, liquid or gas. Solid can be wood, liquid can be kerosene, and gas can be LPG. But there are few substances which do not burn in the presence of air or oxygen to produce heat and light. They are called as non-combustible substances, like sand, रेत एक example है. So any combustible substance does not catch fire of its own. Very true. So they catch fire at a particular temperature that is known as ignition temperature. So what is ignition temperature? It is, ignition word आया ignite से. Ignite मतलब आग लगाना, चिंगारी देना. So what is ignition temperature? It is the lowest temperature, बिल्कुल कम temperature at which a substance catches fire. And the combustible substance does not catch fire until and unless the ignition temperature is achieved, or as long as the temperature is lower than the ignition temperature. So like kerosene, oil, wood रखे रहते हैं आपके घरों में, अपने आप से आग थोड़ा ना पकड़ लेते होंगे, बट अगर हम उसको हीट करें, केरोसिन को हीट करें, सडनली इट विल कैच फायर. अगर हम लकड़ी को थोड़ा हीट करें, इट विल नॉट कैच फायर. दैट मीन्स द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन इज लो दैट ऑफ वुड. लकड़ी को ज़्यादा जलाने में वो आग पकड़ती है, केरोसिन को तुरंत लगा दो वो आग पकड़ लेता है. सो द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन इज लो इन कंपेरिजन विद वुड. And those combustible substances which have low ignition temperature, they burn easily, like petrol, kerosene, diesel. इनका low होता है ignition temperature, and higher ignition temperature is like wood, coal. इन सबका थोड़ा सा high होता है in comparison with kerosene and all. So substances which have low ignition temperature and catch fire easily with a flame, there are known as inflammable substances like alcohol, petrol, LPG, etc. Next heading is, how do we control fire? So we can prevent a substance from catching a fire by not allowing its temperature to reach the ignition temperature. And for example, you can use water to lower down the ignition temperature, and otherwise you can use any other extinguishing material. For example, you can use sand, you can use fire extinguishers also, so that the ignition temperature can be lowered down. But water will not work well on electrical fires, क्योंकि बिजली के अगर आग लगी और आपने पानी डाल दिया तो पानी के थ्रू करंट दौड़ जाएगा. सो पेट्रोल एंड ऑयल तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बिकॉज पेट्रोल एंड ऑयल हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, तुरंत वो आग और भड़का देंगे. इन एन इलेक्ट्रिकल फायर वाटर में कंडक्ट करंट, मैंने अभी आपको बताया. एंड इफ ऑयल एंड पेट्रोल oil or any other petrol catches fire, then pouring out water on it will not help. Why? Because oil is lighter than petrol. वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा, floats on the top surface, और वेपराइज होगा और आग वैसी ही लगी रहेगी.
सो आपने देखा होगा कई बार आपके कुकिंग ऑयल पैन में होता है, इट ऑल्सो कैचेस फायर. वाई इट कैचेस फायर? बिकॉज व्हेन द पैन इज़ वेरी हॉट, या कढ़ाई या जिसमें भी आप खाना बना रहे हैं, जब इट इज़ वेरी हॉट एंड द इग्निशन टेम्परेचर अचीव हो गया है आपके तेल का, तो कई बार उसमें भी आग लग जाती है. सो जनरली चाइनीज़ फूड आइटम्स में ऐसा जनरली देखा गया है. सो उसके लिए क्या करना है, यू नीड टू टर्न ऑफ द गैस, कवर द पैन विद अ लिड. इससे क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी एंड द फायर विल सडनली इट विल एक्सटिंग्विश. सो how you can remove the elements of fire? The best way to remove is to dump water on fire, because why? The water helps the temperature to lower down, उसको ठंडा कर देता है, and it also spreads the fire from, so that it cannot be spread. आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में there is a picture where these fire brigade people, they are extinguishing the fire with the help of water. Then secondly, you can use non-inflammable substances like sand या baking soda. Baking soda क्या करेगा, it will produce carbon dioxide which will help in putting off the fire. मैं आपको बता दूं, fire will always burn in the presence of oxygen. In the absence of oxygen, fire will not burn. Or else putting a person in a blanket will also help in reducing the fire. So removing the fuel is the most difficult approach in most of the fires. So you have seen this fire extinguishers. ये हमारे स्कूल में लगे हुए हैं, हमारे ऑफिसेस के बाहर, आपके क्लासेस के बाहर लगे हुए हैं. So these disaster, it is known as disaster management strategy. पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है इन सब चीज़ों की. फायर एक्सटिंग्विशर्स they have compressed कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड दिस, मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हमेशा फायर बुझती है, बिकॉज ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती. CO2 ऑलवेज एक्सटिंग्विशेस फायर. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंबशन? वन इज़ रैपिड कंबशन, इन विच द फायर टेक्स प्लेस वेरी रैपिडली, तुरंत आग लगती है एंड हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है. लाइक फॉर एग्जांपल, आपने गैस का नॉब ऑन करा और आपने माचिस की तीली दिखाई या लाइटर को क्लिक करा, तुरंत आग पकड़ती है. दैट इज़ रैपिड कंबशन. सेकेंड इज़ स्पॉन्टेनियस कंबशन, जिसमें ड्यू टू हीट ऑफ सन या लाइटनिंग की वजह से, बिजली गिरने की वजह से फॉरेस्ट में रेंज में आग लग जाती है एंड इट बर्स्ट आउट इनटू फ्लेम्स, बहुत लंबी चौड़ी फ्लेम्स निकलती हैं. दैट इज़ स्पॉन्टेनियस कंबशन. एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जांपल है लाइक वाइट फॉस्फोरस, जैसे ही एयर की प्रेजेंस में आता है तुरंत वो आग पकड़ता है. इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज अराउंड रूम टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड. अदरवाइज जनरली वाइट फॉस्फोरस को हम एक लिक्विड में रखते हैं, जैसे कैरोसिन वगैरह में रखा जाता है उसको. थर्ड इज एक्सप्लोजन. आपने सुना होगा, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स इज वन एग्जाम्पल. इन दिस प्रोसेस व्हेन हीट, light and sound, all three are produced, it is known as explosion. Example is bursting of crackers, fireworks. Now what is flame? So I think all of you have seen a candle burning, and when the melted wax vapors they rise through the wick. wick जो कैंडल के अंदर की डोरी होती है उसको wick कहते हैं. ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन का मतलब है अगेंस्ट द ग्रेविटी वेपर्स ऊपर की तरफ चढ़ते हैं विक में, and it burns in the presence of air which produces a flame. And these flame, they also produces various hydrocarbons and carbon particles. That is why the flame is seen. So the structure of flame की अगर हम बात करें, अगर structure of flame की अगर हम बात करें, so there are 3 zones. The outer zone is blue in color, the middle is yellow, and the innermost zone is black in color. आप ये कैंडल जला के देख भी सकते हैं. The outer is the hottest, middle one is moderately hot, and the inner one is the least hot zone. And the outer zone is, उसमें rapid और complete combustion होता है wax vapors का, and that is the hottest part, and it is also known as non-luminous zone. अगर हम उसमें कोई कॉपर वायर लगाएंगे, सो कॉपर वायर विल बिकम रेड हॉट एंड इट विल ग्लो. सो अगर हम मिडिल जोन की बात करें, सो देयर
The unburnt wax vapors, they partially decompose to form free carbon, which becomes hot and emits yellow light. And innermost zone is black in color, where, and it is also known as a dark zone of the candle, where the combustion does not occur due to the lack of oxygen. These are two experiments, एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2. एक्टिविटी 1 वाला आपको करके मुझे दिखाना है, और आपको करने के बाद यू हैव टू क्लिक द फोटोग्राफ्स एंड यू नीड टू सेंड मी. ओके, दिस इज़ योर होमवर्क. यू नीड टू क्लिक द फोटोग्राफ्स एंड यू नीड टू सेंड मी. एक्टिविटी 2 अगर कॉपर वायर आपको मिलती है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ओनली डू एक्टिविटी 1. थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल.